महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते। सबने मन बना लिया शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे तो वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते Good evening and welcome friends this Monday 5 p.m. Hope you had a good cracker of a Diwali with your loved ones. Let's begin this with the headlines first. जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी। Yet another India Alliance leader insults Sanatan Dharm. BJP hits out, slams Sanatan hate. कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers on pollution. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। Prime Minister Modi raises Mahadev scam, calls Baghel government hub of corruption in Chhattisgarh. High drama outside Gautam Singhania residence. His wife claims that she was locked outside. As India counts down to the mega Ram temple inauguration, devotees to get a glimpse of Ram Lala from February 2023. And UK Prime Minister Sunak sacks Suella Braverman after remarks on pro-Palestine protests. She was the Home Secretary. All right, yet another India Alliance leader, Swami Prasad Maurya, of course a repeat offender, has made an anti-Hindu comment. He has insulted Hindu goddess Lakshmi this time. Take a listen to what he has said. हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूँ, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूँ, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर
हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। All right, strong words there, and as expected, attracting equally strong reactions. So we have had a press conference by the BJP's Gaurav Bhatia as also Swami Chakrapani. Let's listen into them. देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। और दुख की बात यह है कि जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस नेता का जो वक्तव्य आया है इसकी हम निंदा करते हैं। तो ये माना जाएगा कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। और अभी कल ही की बात है, एक और कांग्रेस के नेता है जिन्होंने कहा यह बात। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हिंदू देवी देवताओं से नफरत करती है, यह हर कोई जानता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सभी धर्मों के अनुयायियों की भावनाओं का आदर किया है, और दूसरी तरफ ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, इनका वजूद मिट जाएगा। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी, ये हमारा मानना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं, स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं है, ऊल जुलूल पागलपन रोज आए दिन बयान देते हैं, वो भी बिना समझे कुछ देते हैं। ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जैसा मैंने समझा है, जाना है, वो बड़े धर्मपरायण है। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि धर्म पत्नी के अगर वो कर रहे हैं उसी से थोड़ी सी बचे हुए हैं, और हमें लगता है उन्हीं के पुण्य प्रताप से कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि धर्मपत्नी का, और हमारे यहाँ तो नारी का बहुत ही सम्मान है, यत नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, शास्त्र हमारा कहता है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इन पे रोका जाए, इन पे विराम लगाया जाए, और नहीं मानते हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए। बहुत हो चुका हमारी धर्म की आस्था पे कुठाराघात। All right, moving on, it is indeed a cracker of an unfortunate divot on pollution in the national capital. Delhi Minister Gopal Rai has now said that Diwali celebrations is the sole reason behind deteriorating air quality. Hitting back, the BJP has now asked AAP to stop targeting Hindu festivals. So listen into the charges and the counter charges flying in. जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए।
एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो AQI की स्थिति और विकट थी। 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई पटाखे या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे, तब कैसे प्रदूषण था? और आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2-2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है। कल 900 घटनाएं हुई है, कुल मिलाकर 23,000 घटनाएं हुई है और इस कालखंड में उसका कंट्रीब्यूशन 40% से अधिक है, ये डेटा बताता है। परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। देखिए, अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी में मत छोड़िए। आप उस पे पीछे मत छुपिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप ये सब जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो पराली सबसे बड़ा कारण था। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर आप चुप रहेंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय जी से कि जरा आंकड़े जारी कर दीजिए। 15-20 दिन पहले जो प्रदूषण का लेवल था दिल्ली का, जो 900 टच कर रहा था, और आज क्या का प्रदूषण लेवल क्या है? जो हमारी जानकारी है 366 है। तो 15 दिन पहले तो कोई फायर क्रैकर्स नहीं चल रहे थे, तब क्यों कारण था? कारण सिर्फ एक ही है, आपकी नाकामी। 12 साल से आपने दिल्ली के अंदर एक भी बस डीटीसी के लेके नहीं आए हो, जिसकी वजह से व्हीकल एमिशन बढ़ रहा है। All right, let's look at top wrap-up stories from across the country. Addressing a rally in Shivpur, Madhya Pradesh, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan lashed the Congress and said that Congress spreads confusion and are dishonest. He wants people to not get fooled by them. It's Congress that is stopping the schemes which the BJP started for the benefit of the public. याद रखना, ये झूठी और बेईमान कांग्रेस, ये भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोज झूठ बोलते हैं और रोज मुझे ही गाली देते हैं। सपने में भी मैं ही आता हूँ, मामा ने ये कर दिया, मामा ने वो कर दिया। इनके चक्कर में मत आना, क्योंकि ये तो योजना बंद करने वाले लोग हैं। आपको पता है जब कांग्रेस आ गई थी तो मेरी बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, वो पैसा डालना बंद कर दिए। Actor Sahil Khan has been booked by Mumbai police in the Mahadev betting apps case. This is the first time that Mumbai police has booked any actor in the alleged betting scam. ID officials raid premises linked to Sabitra Indra Reddy's relatives. The income tax sleuths searched the residence of Pradeep, who is allegedly a close relative of the minister. In 2018, Reddy contested elections from Maheshwaram on a Congress ticket and won in spite of the TRS wave in the state. Prime Minister Modi launched a scathing attack at Congress in Chhattisgarh. The Prime Minister called out the Grand Old Party and said that the Chief Minister looted the state, committed corruption and accumulated a huge amount of looted money. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है।
जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। Sitting back at the preamp, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel said that Prime Minister should first take action against those who have come out clean after being washed in the Modi washing powder. करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उस पर पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। Firing was reported in Chandigarh at the residence of an IAS officer. Firing was it happened at around 11:30 p.m. last night. Reports suggest the IAS officer is currently posted with the Punjab Health Department. NCB Mumbai Bus International Drug Syndicate with Pan-India Network arrests one Zambian national with 2 kgs cocaine at a Mumbai hotel. They also arrested a Tanzanian woman in Delhi. The value of the recovered drugs is approximately 15 crores. Massive fire broke out at a building in Hyderabad on Monday, killing at least 9 people. Fire started from the ground floor of the multi-storied apartment complex where some drums containing chemicals were stored and then spread to the other floors. A woman working in a homestay in Agra has allegedly been gang raped and 5 persons, including a woman, have been arrested for it. A purported video of the woman crying for help has now surfaced. Apart from rape charges, attempt to murder charges have also been slapped against the accused. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami held a press conference at the State Disaster Operations Centre and said that 40 people are trapped inside the Tilkiara tunnel located on the Uttarkashi-Yamunotri road. Food and water along with oxygen are continuously being provided to all the people inside, and that communication has been established with them. All of them are reportedly safe. Alright, sources such as the Delhi LG office has received the request from CBI to probe extortion charges against former Delhi Minister Satyendar Jain. CBI has also sought the LG's nod for similar investigation against the then Tihar Jail Superintendent, then ex-officer Raj Kumar. The agency has sought permission under provisions of the Prevention of Corruption Act. Take a look at this 1-minute report. In fact, sources within the Lieutenant Governor's office essentially indicating that the Central Bureau of Investigation has basically moved an application seeking sanction to prosecute former Minister Satyendar Jain. In fact, they are looking into allegations that have been leveled against him by jailed conman Sukesh Chandrasekhar. Remember, the allegation here is that an extortion racket is essentially being run by the former minister, that too from inside the jail. Remember, there have been searches that have been carried out in the past in Tihar Jail, and some serious allegations have been leveled about the alleged involvement of Tihar Jail officials in running an extortion racket. Now, as per the Central Bureau of Investigation, now they've basically sought a sanction under Section 17A of the Prevention of Corruption Act. So far, we do not have any confirmation whether at all the nod has already been given by the Lieutenant Governor, which it is indicated that perhaps in the next couple of days, perhaps within this week, a decision would likely be taken and would be communicated to the Central Bureau of Investigation. All right, on that note, a short break. On the other side, high drama outside Gautam Singhania residence as wife claims that she was locked outside. This happens in Mumbai. And UK Prime Minister Sunak sacks Suella Braverman after remarks on pro-Palestine protests. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध
बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था, नहीं लगे। हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से, प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। On campaign trail in Chhattisgarh's Mungeli, Prime Minister Modi raised the Mahadev batting scam again, launching an unrelenting attack on the Baghel government. Let's listen in. जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। Prime Minister Rishi Sunak of the United Kingdom has carried out a major reshuffle in the cabinet, firing his controversial Home Secretary Suella Braverman, who had been seen to be stoking tensions. Sir James Cleverly is all set to be the new UK Home Secretary. Cleverly's chair being taken by former Prime Minister David Cameron. Listen. British Prime Minister Rishi Sunak fired Home Secretary, who drew anger from accusing police of being too lenient with pro-Palestinian protesters. The government said Braverman left her job as part of a cabinet shuffle on Monday.
Sunak was under growing pressure to fire Braverman, a divisive figure popular with the authoritarian wing of the governing Conservative Party. In a highly unusual attack on the police last week, Braverman said London's police force was ignoring law-breaking by pro-Palestinian mobs. She described demonstrators calling for a ceasefire in Gaza as hate marchers. On Sunday, far-right protesters scuffled with the police in London. Critics accused Braverman of helping to inflame tensions. James Cleverly will be the new UK Home Secretary. Agency report for Republic TV. Now a wrap of stories from the war zone in Israel. Prime Minister Netanyahu has yet again pushed back against calls for Gaza ceasefire, saying Israel's battle to crush Gaza's ruling Hamas will continue. According to Netanyahu, Israel has been committed to protecting civilians, and civilian deaths should be placed squarely in the responsibility of Hamas for keeping its military installations inside hospitals. Images taken by satellite show the scale of devastation around Gaza's largest hospital as the fighting between Hamas and Israeli troops intensifies. Before and after images released by Maxar Technologies show the extent of damage caused by Israel's bombardments around Shifa Hospital. Israel has informed some people have been evacuated from the hospital. Footage released by the Israeli Defense Ministry in November showed the aero missile defense system being used during the ongoing war between Israel and Hamas. The system was used operationally for the first time during the conflict to intercept missiles over the Red Sea. This comes after Iran-backed Houthi rebels have launched missiles at Israel's southernmost city of Eilat multiple times. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, during a news conference with South Korean Defense Minister in Seoul on Monday, discussed U.S. military airstrikes on the two locations in eastern Syria involving Iranian-backed groups. According to the Pentagon and U.S. officials, the U.S. military hit a training location and a weapons facility. In a statement, Defense Secretary Lloyd Austin said the strikes targeted sites near Abu Qama and Mayadeen and were used by Iran's Revolutionary Guard Corps as well as Iranian-backed militias. European Union foreign ministers have gathered to discuss humanitarian pauses and ceasefires in the latest Israel-Hamas war at a meeting in Brussels on Monday. Arriving ahead of the talks, EU High Representative Josep Borrell said in this 27 EU member statement they asked for immediate pauses. All right, another break on that note, but on the other side. Yet another India Alliance leader insults Sanatan Dham, BJP hits out, slams Maurya. A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers on pollution in the national capital region. पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ बड़े बड़े लोग हैं यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा बड़े बड़े लोग भाई यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था नहीं हो रहे हैं महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई नहीं लड़ने से सबने मन बना लिया शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं।
राहुल आएंगे और वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ। Viewers, we are live and breaking. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest this Monday evening. And a top story is what is really happening when it comes to another India Alliance leader insulting Sanatan Dharma and making controversial remarks about goddess Lakshmi. Many reactions have come in, and this is our top story. We'll get to all the details of the story, but first, the headlines we're tracking right now. जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी। Yet another India Alliance leader insults Sanatan Dharma. BJP hits out, slams Sanatan hate. कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers on pollution. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। Prime Minister Modi raises Mahadev scam caused Baghel government hub of corruption. High drama outside Gautam Singhania's residence as wife claims that she was locked outside. As India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get glimpse of Ram Lalla from 2024. UK Prime Minister Sunak sacks Suella Braverman after remarks of pro-Palestine protest. Viewers, let's go straight to the top story we're tracking right now, and it's a big controversy, a big row which has erupted. Yet another India Alliance leader has made an anti-Hindu comment. Swami Prasad Maurya has insulted Hindu goddess Lakshmi. Viewers, that's the top story we're tracking right now, and we have seen several instances of India Alliance leaders insulting Sanatan Dharma, and in the latest we are seeing that SP parties, Swami Prasad Maurya stoked a row with remarks over goddess Lakshmi. Viewers, and as we keep getting our viewers more updates, let's tell you that we have also got many reactions coming in, viewers, on this story. Let's play out the reactions coming in. Even the Congress has slammed Maurya over his comment. हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें,
किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। And viewers, hitting out the BJP and Hindu leaders both have now slammed the India alliance, saying that the bloc is against Hindus. Let's play out those reactions coming in. देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। और दुख की बात यह है कि जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस नेता का जो वक्तव्य आया है इसकी हम निंदा करते हैं। तो ये माना जाएगा कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। और अभी कल ही की बात है, एक और कांग्रेस के नेता है जिन्होंने कहा यह बात। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हिंदू देवी देवताओं से नफरत करती है, यह हर कोई जानता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सभी धर्मों के अनुयायियों की भावनाओं का आदर किया है, और दूसरी तरफ ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, इनका वजूद मिट जाएगा। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी, यह हमारा मानना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं, स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं है, ऊल जुलूल पागलपन रोज आए दिन बयान देते हैं, वो भी बिना समझे कुछ देते हैं। ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जैसा मैंने समझा है, जाना है, वो बड़े धर्मपरायण है। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि धर्म पत्नी के अगर वो कर रहे हैं उसी से थोड़ी सी बचे हुए हैं, और हमें लगता है उन्हीं के पुण्य प्रताप से कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि धर्मपत्नी का, और हमारे यहाँ तो नारी का बहुत ही सम्मान है, यत नारी स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, शास्त्र हमारा कहता है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इन पे रोका जाए, इन पे विराम लगाया जाए, और नहीं मानते हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए। बहुत हो चुका हमारी धर्म की आस्था पे कुठाराघात। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी किया, आज स्थिति क्या हो गई, कार्रवाई उसके ऊपर हुआ और आज समाज में नहीं निकल पा रही। कमलेश तिवारी जी का सरधर से अलग इस्लामिक आतंकवादियों ने कर दिया। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य रोज बोलते हैं हम इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, इस्लामिक आतंकवादी नहीं है। नहीं तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सनातन में देखिए महिलाओं का इतना सम्मान है कि आप देखिए
6 वर्ष की कन्या की पूजन होता है। इस्लाम में 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह हुआ। 9 वर्ष तक हमारी एक कन्या का पूजन होता है। नवरात्रि में 9 वर्ष में इस्लाम में शारीरिक संबंध बनाया, उस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, टिप्पणी करना ही था तो क्या आपको सनातन नहीं मिला था? क्या हमारी माँ लक्ष्मी ही मिली थी क्या टिप्पणी करने के लिए? कुरान के कुरीति के बारे में आपने टिप्पणी क्यों नहीं किया? आज इजराइल और फिलिस्तीन में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, हमास की क्या स्थिति है आप देखिए, मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी क्यों लड़ रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई। आपका आस्था सनातन में नहीं है तो आप सनातन की देवी देवता। And viewers, let's get to the other story we're tracking right now. Firing has been reported at the residence of an IAS officer in Chandigarh. The firing was reported at around 11:30 p.m. last night. Reports suggest that the IAS officer is currently posted with the Punjab Health Department. Here's more. It was a narrow escape for the IAS officer who is presently serving with Punjab government, Narendra Kumar Sharma. And right now we are just standing outside the official residence, the government residence of IAS Narendra Kumar Sharma, whose house has been targeted by some unidentified armed men. And in fact, the bullet has been opened at the bedroom of IAS where he was sleeping. And this incident has been taken place at 11:30. And you can see they have celebrated the Diwali last night. And after the Diwali celebrations, they went to their bedrooms to take rest and to sleep. But immediately at 11:30, the bullet has been fired at the bedroom, and in fact the IAS just had a narrow escape. And following that incident, immediately police has been called and an empty shell has been recovered from the inside the bedroom of IAS Narendra Kumar Sharma. And all of a sudden that happened, unidentified people has been opened fire. Either it was accidental or it was a target. It was a targetly done. So this is the part of investigation. So now Chandigarh police is also procuring the CCTV cameras around the area, just because this is the entire complex is occupied with the government residences, including IAS, IPS officers and other senior officials. And viewers, the other big story is what's happening post-Diwali. It's indeed a cracker of a debate on pollution in the national capital. Delhi Minister Gopal Rai has now said that Diwali celebration is the moot reason behind the worsening air quality. Hitting back, the BJP has now asked the Aam Aadmi Party to stop targeting Hindu festivals. Listen in to all the reactions coming in. जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो AQI की स्थिति और विकट थी। 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई पटाखे या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे, तब कैसे प्रदूषण था? और आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे।
भाई सुप्रीम कोर्ट के दो बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है। कल 900 घटनाएं हुई है, कुल मिलाकर 23,000 घटनाएं हुई है और इस कालखंड में उसका कंट्रीब्यूशन 40% से अधिक है, ये डेटा बताता है। परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। देखिए, अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी में मत छोड़िए। आप उस पे पीछे मत छुपिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप ये सब जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो पराली सबसे बड़ा कारण था। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर आप चुप रहेंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय जी से कि जरा आंकड़े जारी कर दीजिए। 15-20 दिन पहले जो प्रदूषण का लेवल था दिल्ली का, जो 900 टच कर रहा था, और आज क्या आपका प्रदूषण लेवल क्या है? जो हमारी जानकारी है 366 है। तो 15 दिन पहले तो कोई फायर क्रैकर्स नहीं चल रहे थे, तब क्यों कारण था? कारण सिर्फ एक ही है, आपकी नाकामी। 12 साल से आपने दिल्ली के अंदर एक भी बस डीटीसी के लेके नहीं आए हो, जिसकी वजह से व्हीकल एमिशन बढ़ रहा है। And viewers, Prime Minister Modi launched a scathing attack at Congress in Chhattisgarh. The Prime Minister called out the Grand Old Party for looting the state of Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के नौजवान, किसान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें कांग्रेस की विदाई के लिए एक मुस्त होकर के मैदान में उतरे हैं। खासकर महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें कांग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है और इसलिए वो आपको झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आपने कांग्रेस के हर असत्य को हराने की शुरुआत पहले ही कर दी है। कल आप सबने दीपावली मनाई है। दीपावली की मेरी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप मेरे शब्द लिख रखिए, आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। Viewers, much more coming up on the other side. High drama outside Gautam Singhania's residence as wife claims that she was locked outside. UK Prime Minister Sunak sacks Suella Braverman after remarks on pro-Palestine protests. Stay tuned. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।
कर रहा हूँ पता नहीं रस्सी दूसरे खा रहे हो रहा हूँ ना बड़े बड़े लोग हैं यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा बड़े बड़े लोग भाई यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम दिया था नहीं हो रहे हैं। हवाला में जो काम हो रहा है अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Viewers, top global updates. British Prime Minister Rishi Sunak fired Home Secretary Suella Braverman and drew the anger for accusing police of being too lenient with the pro-Palestine protesters. The government said that the Braverman left her job as part of a cabinet shuffle on Monday. However, Sunak was under growing pressure to fire Braverman, a divisive figure popular with the authoritarian wing of the governing Conservative Party. British Prime Minister Rishi Sunak on Monday appointed James Cleverly as Interior Minister, switching the 54-year-old from the role of Foreign Secretary, which he had held for a year. The move part of Sunak's first major reshuffle after nearly 13 months in power, following the UK leader sacking Suella Braverman, an Interior Minister, earlier on Monday. Meanwhile, former UK Prime Minister David Cameron has been appointed as the UK Foreign Secretary. At a time when Trudeau is blaming India over Nidja killing, the police service in Canada has released a photo of an SUV and surveillance video of two suspects in last week's fatal shooting of a gang member and his 11-year-old son, who was gunned down while parked outside a fast food restaurant. Police have identified the father as a 41-year-old Harpreet Uppal and said that he was a high-level gang member involved in the drug trade, but they have not identified the body. Nepal has become the latest country to ban TikTok. The decision to ban the Chinese-owned app comes in cabinet meeting. According to the government, in the past 4 years, 1,647 cases of cybercrime have been reported on the video-sharing app. The Cyber Bureau of the Nepal Police, Ministry of Home Affairs, and representatives of TikTok discussed the issue earlier this week. Monday's decision expected to be enforced following the completion of technical preparations. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin emphasized his country's commitment to its allies in Asia and the Indo-Pacific region during a news conference with South Korean Defense Minister Shin Won-sik in Seoul on Monday. He added that the recent U.S. military buildup in the Middle East in response to the latest war will not compromise its strength in the Indo-Pacific region. Floods caused by torrential rainfall have killed at least 31 people in various parts of Somalia. As per government, since October, floods have displaced nearly 500,000 people and disrupted the lives of over 1.2 million people. They have also caused extensive damage to civilian infrastructure, notably in the Gedo region of southern Somalia. And viewers, the Israel-Hamas war has entered its second month. On the front line, Republic has been getting you minute-to-minute updates. Here is a report filed by my colleague Gursimran from earlier in the day. Take a look.
The fighter jets of Israel are taking the strikes at the locations of Hamas terror group. Important to mention that there has been a heightened activity on the southern border today morning when the jets, around a dozen of fighter jets along with the Apache attack helicopters, they are carrying out the strikes inside the Gaza Strip. And these fighter jets, they are moving day in and out. Round the clock operations have been intensified. If we speak of at least past 6 to 7 hours, the operations have been intensified in such a manner that every passing minute there is a strike that is taking place deep inside the Gaza Strip. And now coming to the question you have asked, the Al-Shifa hospital, there was a supply of 300 liters of the fuel by the Israel Defense Forces, but that was rejected due to the pressure that was mounted by the terrorists of Hamas, because the basement was being used by the terrorists, or is being used by the terrorists of Hamas as one of their major infrastructure. And when the Israel Defense Forces, risking their life, they brought in 300 liters of the fuel for the supplies to ensure that the medical facilities do not run out of fuel. They were rejected, and later it came into being that it is the terrorists of Hamas, those who have obstructed the staff of the hospital from taking the fuel from the Israel Defense Forces. Some of the videos were also shared by the IDF regarding that how they were providing the fuel to the hospital, but it was denied under the pressure that is mounted by the terrorists of Hamas. What the terrorists of Hamas is doing, they are trying to play a psychological game. They are denying the fuel, they are letting the people inside the critical units to die, and then they are trying to put the blame on the Israel Defense Forces that see how the fuel in the important hospitals and also the medical facilities is running out, and the Israel is paying no heed. That's why they want to play at the international forum that the Israel is resorting to the war crimes. That is far from reality, and the video that has been shared by the Israel speaks so that they were trying to ensure that there is a supply of fuel to the Al-Shifa hospital, even at a cost that hospital's basement is being used by the terrorists of Hamas as one of its key operational centers. That they supplied the fuel, but that was rejected by the hospital authorities under the pressure of terrorists of Hamas. Viewers, much more coming up on the other side. Yet another India Alliance leader in South Sanatan Dharma. The BJP hits out, slams Sanatan hate. A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers on pollution. Stay tuned. पतंगे रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था नहीं लगे। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ने से सबने मन बना लिया, शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे और वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इसराइल और
हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती हैं। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। We are reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG. महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते। सबने मन बना लिया, शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापिस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे और वैसी बी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। Welcome, you're watching the Monday edition of This is Exclusive with me, Shavan Sen. Ladies and gentlemen, there's been intense gunfight across the border. This is in Mizoram. Remember, what's essentially happened is that there has been intense gunfighting between Myanmar army and the rebel outfits. Agency sources indicate that roughly about 1,000 Myanmari nationals have crossed over, resulting in yet another refugee crisis. We'll get you the latest coming in from Mizoram as the state has now been put on alert. All this and much more on this edition of This is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी। India Alliance leader insults Sanatan Dharm. BJP hits out, slams Sanatan hate. A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers on pollution. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। The raises Mahadev scam calls Bagel government hub of corruption. High drama outside Gautam Singhania as wife claims that she was locked out. As India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get a glimpse of Ram Lalla post-inauguration. UK Prime Minister Sunak sacks a woman after remarks on pro-Palestine protest. Ladies and gentlemen, more than 1,000 individuals from Myanmar escaped from Kaumavi in Chin State to Zokhaftar in Mizoram. Now, following a gunfight between Myanmar army and rebel outfits. The conflict has gotten intense in Myanmar, posing a challenge of refugees in
Mizoram. In fact, what we are given to understand as per sources on the ground and also speaking to the district commissioner is that the situation had only worsened late last evening. Sunday evening, when there was intense gunfight that took place between the Myanmar army and the rebel outfit. A rebel outfit which was formed in the year 2021 that has taken on the Myanmarese army. In fact, we are given to understand resulting in that particular situation is yet another refugee crisis that is taking place. Mizoram has now confirmed that a government team has been sent to the area to assess the situation as more and more Myanmari individuals are trying to now cross over the border areas. We'll get you the latest report. Take a look at these detailed report that we are putting together, and then we go across to our reporter joining us from Guwahati to get us the latest report. India is facing a fresh refugee challenge. Over 1,000 refugees from Myanmar have fled to Mizoram. This comes after Myanmar Army's airstrike and operation against armed group People's Defence Force camps. The situation along the Indo-Myanmar border in Mizoram turned hostile on Sunday evening again after the Myanmar Army carried out airstrike in the border areas. It may be mentioned that the Myanmar Army has been carrying out operations to flush out the pro-democratic forces led by the various Sin Defence Force as well as the People's Defence Force in the Sin state of Myanmar. A Myanmar refugee who was residing near the border sustained injury in the gunfight between Myanmar Army and rebel group and later succumbed. Many refugees from Myanmar have been already taking shelter in India. Meanwhile, after the operations that were carried out on Sunday, more than 1,000 people from Myanmar tried to cross over to India seeking shelter in a safe place. It may be mentioned that fierce gun battle also broke out between the pro-democratic forces and the Myanmar army, in which some casualties on both sides have also been reported. The fighting in Myanmar has posed a security threat to India with the influx of refugees. Bureau Report, Republic TV. Getting in the first breaking news on the story that we are tracking closely. Remember, this is a story which seems to have been completely blanked out by the other media. Getting us more details after speaking to the district commissioner. There's heavy gunfighting since Sunday evening. District officials are also now confirming that reports of bombing that's closer to the international border. In fact, we're also getting a confirmation that there has been no damage on the Indian side. In fact, the government has sent a team of magistrate to Zokhawtar, which is in Mizoram. The government is currently assessing the ground situation as there are reports that are coming in that Myanmari nationals have crossed over. Roughly about 1,000 Myanmari individuals, because remember this number again seems to be fluctuating at this point in time. There is no confirmation really coming in as far as the exact number, but it is expected more than 1,000 is the rough estimate that has been done by the government on the ground, getting us the latest details. Let's just quickly go across to my colleague Anirudh, who's also joining us while we play out those pictures that have been accessed by Republic TV as the situation remains extremely fluid across the international border. First to you, Anirudh, just to put this into perspective, this is a fight that is between the Myanmar army and, for that matter, a rebel group formed in the year 2021. What's the current situation like? Because this is going to have a direct impact with the refugee crisis only aggravating. Yes, Aman, as you all know that more than 50,000 refugees from Myanmar are already taking shelter in Mizoram in India. Yesterday's development is also very significant because more than 1,000 people from Myanmar tried to cross over the border seeking safe place in India. Khao Maui and Zokhawtar are
facing each other along the border, and the airstrike that was carried out by the Myanmar army on Sunday evening was in Khao Maui. And when the airstrike, during the airstrike, the Myanmar army bombed two particular locations in Khao Maui area, destroying many civilian areas on the other side of the border, and that is the reason why more than 1,000 people moved towards Jakarta in India. But there have been many of them have been pushed back by the forces. This is what we are getting to know from the ground. However, there are many people still along the border taking shelter, seeking safe refuge in India. Meanwhile, the pro-democratic forces, which we also call as the People's Democratic Front or the Sin Defense Forces, which are the rebel groups in Myanmar that have waged their war seeking democracy in the country since 2021 after the military junta took over, had also carried out a massive counter-strike against the Myanmar army, and one army establishment in Rikhauder in Myanmar, hardly a few hundred meters away from the international border, have been completely damaged, have been completely wiped out by the rebel forces. And today morning we got some visuals coming in from Mizoram where we can clearly see people keeping a close eye, people trying to get a sense of what is happening on the other side of border in Myanmar, across the border from Mizoram, and we got in visuals where the smokes can be seen Anirudh, coming I'll just out request you to stay on with me. Well, and Anirudh, I'll just request you to stay on with me as we're getting in some more breaking news. This is with regards to sources within Assam Rifles now confirming to Republic TV that leaves have also been cancelled of Assam Rifles personnel who were basically deployed along the international border. It turns out that leaves have also been cancelled. Leaves, they've been asked to return to duty. That's the current situation of the ground. That's the latest being reported by my colleague Anirudh. Anirudh, you've also spoken to your sources within Assam Rifles. They're essentially saying that the situation remains quite fluid. What's the sense that you're getting in terms of the deployment of the ground and the very fact that you have Assam Rifles taking this action of cancelling the leaves of their personnel? Does that essentially indicate that the situation appears to be extremely volatile on the ground? Yes, Awan. In fact, the entire Indo-Myanmar border is guarded by the Assam Rifles, and after the military junta took over in 2021, and there have been many attempts made several times towards Manipur as well as towards Mizoram, also from people seeking safe refuge, and Assam Rifles have beefed up the security arrangement along the border. However, we are getting to know from our top sources within the establishment that after yesterday's incident, leaves of many personnel who were on leave away from their battalions have been asked back, and this is particularly for those who are deployed along the Indo-Myanmar border in Mizoram, that their leaves have been cancelled and they are being asked to report back immediately to their respective battalions. This is what we are getting in at this moment. However, official confirmation on this is still awaited. There is no official word, but yes, a top source in the Assam Rifles has confirmed that yes, a message have been conveyed to all those service personnel who were on leave. Sawan. Well, thank you very much, Anirudh, for getting us the latest details. A story that we'll track very closely because remember, it's got a direct impact on the current situation in Mizoram. This is perhaps not the first time that Mizoram stares at a refugee crisis, given the fact that these constant battle between the rebel groups and Myanmar army has resulted in a growing influx situation in the state. Shifting focus now to another story that we have been tracking. This is a harrowing incident which has been reported from Uttarakhand's Uttarkashi, where an under-construction tunnel collapsed late on Sunday, leaving at least 40 labourers trapped inside. Currently, the rescue operations are underway in full swing
led by the SDRF and the local police. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami visited the Silkyara Barkot tunnel site for the review of the rescue operation. In fact, that's the latest images that are coming in. Let's play out that report filed by my colleague Vishal, and then we'll also go across to Vishal, who's getting us a live update as the rescue operations are underway. We are being told that food and oxygen supply is being provided so that they can be taken out safely. इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तरकाशी में है और आपको बता दूं, मेरे पीछे आप जो टनल देख रहे हैं, ये सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच में ये टनल जो है वो अभी बन रही है और इसी टनल के अंदर 40 जिंदगियां जो हैं वो जिंदगी और मौत की लड़ाई पिछले 36 घंटे से ज़्यादा समय से लड़ रही हैं। दरअसल कल सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में इस टनल में काम कर रहे 40 मजदूर जो हैं वो फंस गए और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर अलग अलग मशीनें आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, ड्रिलिंग मशीन है और ये तमाम मशीनों के सहायता से अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ देखिए, यहाँ पर आपको जेसीबी नज़र आएगा, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको बुलडोज़र नज़र आएगा और इस तरफ भी काफ़ी मशीनें जो हैं वो आपको स्टैंड बाई पर खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। मैं चाहूँगा कि आप मेरे पीछे पीछे आइए और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। टनल के मुख्य द्वार पर लेकर चलते हैं और वहाँ क्या स्थिति है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुँचे हुए थे और उन्होंने पहुँचकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। वो टनल के अंदर भी गए थे और यहाँ पर कई एजेंसियाँ मिलकर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड प्रशासन, आईटीबीपी के जवान भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और ये सभी मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 36 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है और अभी भी 40 जो मजदूर हैं वो इस टनल के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो लगातार सप्लाई की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का कहना है कि सभी मजदूरों से बातचीत हो गई है, सभी सुरक्षित हैं, सलामत हैं, सभी को खाना पानी भी पहुंचाया जा रहा है और कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दोनों तरफ से 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। We'll be tracking the story very closely as the rescue operation is still underway. A reporter is sending us the latest update indicating that the rescue operation perhaps is going to take a little bit more time as the situation is turning out to become a little bit more tricky. Should we focus now to Mumbai, where a video has basically emerged that shows Nawaz Modi Singhania, business tycoon Gautam Singhania's estranged wife, allegedly being locked out of Singhania's Diwali party. Nawaz Modi Singhania herself recorded the video of the incident. In this video that has gone viral, Nawaz can be heard saying that she was standing outside Singhania's property in Thane. She alleged that she was invited for the party, but now she was not allowed to enter the premises. Gautam Singhania, in fact, has released a statement announcing separation from his wife, Nawaz Modi Singhania. We'll try and go across to my colleague Alisha Nair, who's been tracking this story very closely. In fact, she has also reached out to Nawaz Modi Singhania to get her version. We've also reached out to Gautam Singhania to get the latest. In fact, what we are being told is that the statement that has been put out by Gautam Singhania, where he's essentially saying that the separation process is already underway. We've reached out to Nawaz Modi Singhania to get her version on this entire story. As you can see right now on the screens, this is the video that has been accessed. This is a video that she herself had recorded outside Gautam Singhania's residence in Thane, where she says that she was actually invited for the Diwali party, but later on she was basically locked out. Now that's an allegation that has been leveled by Nawaz Modi Singhania. This at a time when reports are now basically coming in that the couple have basically gone in for separation. We'll try and go across to my colleague Alisha Nair, who's going to join us from Mumbai, getting us the latest details to get both versions. In fact, I'm told that Alisha, you've also spoken to Nawaz Modi Singhania to get her version. What is it that Nawaz Modi Singhania has to say on this entire matter? Well, Shravan, we know this incident which happened last week where Nawaz Modi Singhania, who was present at JK Gram
which is the official Singhania's property. And Gautam Singhania, who is the chairman and MD of Raymond, and we know that last week during a Diwali party where she was present there, and Nawaz Modi Singhania herself has recorded the video of the incident, and in the same video which has gone viral, where Nawaz can be heard saying that she was standing outside J.K. Gram Singhania's property in Thane, and she has also alleged that she was invited for the party, but then she was not allowed to enter the premises. The man also can be seen standing inside the gated premises, and she mentioned to be Chandrakant obstructed her entry in the complex using local police and the other security staff there. Then she was waiting outside the gate. She was sitting there outside. She was also with one of the other women, and it was a very chaos and a verbal spat that happened between us. But we don't know whether she was allowed later or not. But we know that also Gautam Singhania, who has given an official statement announcing the separation after 32 years long relation, the marriage which they have been together since 32 years. But right after the video went viral, and I also spoke to Nawaz Modi Singhania. Well, she's been dealing with some legal aspects, and they have been talking to the lawyers on the same. But we'll see whether she will speak to the media or not. But yes, we can see in the video itself where Nawaz Modi Singhania clearly been saying that she is not allowed to the party. Rather, the fact she was invited to the party, but the security who was present at the gated premises, inside the gated premises, did not allow her. They obstructed her, and she was there sitting outside J.K. Gram, which is an official property of Singhania in Thane. Well, thank you very much, Alicia, reporting from outside Raymond's office in Bridge Candy in Mumbai, getting us the latest details. We'll also be updating both the versions coming in from Gautam Singhania as well as Nawaz Modi Singhania, as Republic TV has reached out to both of them, hoping to hear from both of them. That's all that we could pack here. On the other side, we'll also put out yet another story that's coming up, Republic Canada exclusive, getting us details about Bengaluru jail, which has now emerged as a centre for conversion. We'll put out the details on the other side. In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है, और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बता रहा हूँ तो पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नागर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम दिया था महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए
कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7 BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. Just a development, Bengaluru's Parappanagar jail has emerged as a center for conversion, where inmates are allegedly being systematically influenced and persuaded to undergo religious and ideological transformation. In fact, we're putting out more details that is coming in from the investigation that's been carried out by the National Investigation Agency. Take a look at this report coming in from our sister channel, Republic Kannada. This central jail in Bengaluru is under the scanner of National Investigation Agency. Sources say Central Agency has information on an alleged conversion racket that was operating inside the jail. And agencies believe LET terrorist and 2008 Bengaluru serial blast mastermind T. Nazir is behind this conversion racket. It was being understood that T. Nazir, the mastermind of the 2008 Bengaluru blast case, had in fact gone ahead and radicalized them, and he's also a commander of the Lashkar-e-Taiba. So after he's gone ahead and radicalized them, the police have dug deeper into it, and then later they informed the central agencies too, at which point of time the National Investigative Agency has stepped into it, and now shocking details have emerged where it is clearly being understood that Nazir has not only gone on to radicalize the youth, but he was also friendly with the inmates from other religions and communities. As per sources, at least 5 inmates converted to Islam after they were released from jail. They were allegedly brainwashed by T. Nazir and also lured with money. It was operating outside the Parappanagar jail for Nazir as well, and he was in connection with several of the madrasas as well as the Maulvis there. And after the Maulvis, after he had formed this particular network, he used to tell the inmates to go to these particular mosques, collect the cash from these Maulvis, and after that, the conversion would take place where these inmates were also circumcised, is what we get to understand. Agencies are looking for more evidence to build a watertight case to nail the alleged conversion racket. Bureau Report, Republic TV. भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि गैस के सिलेंडर का दाम जो भी हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दे दिया जाए। पतंग रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई यहाँ पुलिस वाले अपडेट हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था नहीं हो रहे हैं। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई नहीं लड़ने सकते। सबने मन बना लिया, शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं।
राहुल आएंगे और वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। Reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7 BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. ये पूरी बर्बाद कर सकते हैं। ये सकते क्या हम लोग तो पूरा चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोड़े रहे हैं, मतलब पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा। पतंगे रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नगर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम दिया था महीनों वाले में। Israel is all prepared for the big war, the Hamas terrorists. The rockets being fired, of course, at Kibbutz Be'eri only. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हमास के आतंकी फायर कर रहे हैं। Get down again, it's a missile. कम से कम दर्जन भर रॉकेट्स की आवाज आई है जो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। We have been hearing continuously an explosion. तकरीबन 50 से 70 BMP जो हैं वो फॉरवर्ड एरियाज पर हैं। The people here were staying, but there was a rocket that was fired. एशकुलॉन की तरफ भी टैंक्स जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी।
Yet another India alliance leader in Sar Sanatan Dharm, the BJP hits out and slams this hate. A day after Diwali, political parties are facing over the impact of crackers on pollution. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है. The Prime Minister raises the Mahadev scam. He calls the Baghel government a hub of corruption. High drama outside Gautam Singhania residence as the wife claims she was locked outside. As India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get a glimpse of Ram Lalla post-inauguration. And the UK Prime Minister sacks Swami Braverman after remarks on pro-Palestine protest. A very good evening. You're watching Republic and I'm Deepthi Sachdeva. You're looking at a lot of action in the poll-bound states. Remember, Madhya Pradesh, Chhattisgarh is waiting to vote for the second phase of polling on the 17th. And then you also have the big elections in Rajasthan and in Telangana. So we here at Republic will get you insights and breaking updates right now coming in from the poll-bound states. Let's get you details first up on what the BJP has wanted to do. This is a complaint against Kamal Nath alleging communal comments, and the party has also demanded that his election rallies be banned. Madhurima is joining us live right now. She has more details of this. Madhurima, what is it that the BJP alleges, and have we heard absolutely anything from the Congress yet on who is wanting to make this battle communal? The Bharatiya Janata Party has made it very clear as what they are claiming in this particular complaint. The BJP is asserting that Kamal Nath in specific areas as well. As you see, that first tenet in the complaint is about a particular tweet on November 12th that itself reeks of communalism. That is what the Bharatiya Janata Party is claiming. The number two complaint in that particular letter to the Election Commission is, Deepthi, that there are specific areas like Ibrahimganj, Ibrahimbad. In such areas, the Congress is campaigning till 2 a.m. in the night. There are multiple meetings, local meetings being organized in these areas, and the Congress is making an attempt to communalize and mint political benefit out of it. This is what the Bharatiya Janata Party is claiming. They are saying that multiple attempts are being made by Kamal Nath and his team of party workers to communalize these entire elections, and they have sought the BJP in the letter to Election Commission has sought an immediate ban on all the campaigning that Mr. Kamal Nath is up to or has scheduled for the next 2 days till the time Model Code of Conduct comes into existence. But this is a very serious claim that the BJP has levelled against Kamal Nath, that the kind of politics that they are doing is communal. The way there are selective areas and there's a selective community that is being targeted, and at the same time they are trying to mint political benefit out of it. Also, they have underlined in the complaint, Deepthi, that how after a certain point of time no meetings, no rallies can be organized, and these rallies that are happening after the given point in time, that is around 2 a.m. and 3 a.m. post midnight. So these all are wrong, and whatever is happening in these meetings raises multiple questions. So the BJP has asked the Election Commission over here to take immediate cognizance of the same and take action as they deem fit. Deepthi. All right, another new election controversy. Madhurima there tracking that story from Bhopal. I thank you right now, Madhurima, and keep getting us those insights.
But do remember, right now it's not just Madhya Pradesh where you're seeing a lot of these political controversies. There's another big controversy that's brewing in from the state of Chhattisgarh. Chhattisgarh has already finished polling in the first phase, that was for 20 seats, and the remaining seats are polling on the 17th. And ahead of that big phase of polling, the Prime Minister, who's been on the campaign trail, has yet again reiterated the big charge that has been made by the Enforcement Directorate of the complicity of the sitting Chief Minister Bhupesh Baghel in the Mahadev betting app scam. And this is how he attacked Bhupesh Baghel. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। While addressing the Vijay Sankalp Maharali in Chhattisgarh, the Prime Minister launched an all-out attack against the Congress, claiming the Grand Old Party did not give reservation to the OBC community, and he also says the OBC Commission was not even given a constitutional status. Congress leader Rahul Gandhi has promised to implement caste-based reservation in Madhya Pradesh if they come to power. This is coming during his campaign in Madhya Pradesh's Neemuch ahead of the upcoming assembly elections. मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। Home Minister Amit Shah said that this time there are two camps in Madhya Pradesh. One camp has Digvijay Singh and Kamal Nath, the other has Prime Minister Modi, Shivraj Singh Chauhan, Narendra Singh Tomar and Jyotiraditya Scindia. During a public rally, he also said it is up to the voters on what they decide. कोई इस बार दो खेमे स्पष्ट है। एक खेमे में श्री दिग्विजय सिंह है, जानते हो ना, जानते हो ना, और कमलनाथ है, और दूसरे खेमे में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। While addressing a public meeting, the Madhya Pradesh Chief Minister has said that he would ensure women development in the state
through all his schemes that have been launched for women development during his tenure. ये दर्द मैंने समझा था मेरी बहनों से, मेरी जिद थी कि अपनी बहनों के खाते खोलूंगा और उसमें पैसा डालूंगा, जो पैसा मेरी बहना का होगा, जब चाहे तब वो खर्च करे। और इतनी लाडली बहना योजना बनाई। वैसे हर महीने 10 तारीख को पैसा डालता था। इस बार दिवाली, धनतेरस सब थी तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिया बहनों के खाते। कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी, चुनाव आयोग की चिट्ठी अभी नहीं डलना चाहिए, पहले से ही सवालिया निशान लगा रहे थे, रिश्तों को थोड़ी मिलेगा, रिश्तों को थोड़ी देंगे। The Telangana Chief Minister and the BRS Chief KCR at the same time campaigned in Damapet, where he recounted the amount of development witnessed by the state during his regime. Amidst a clash between the Congress and the MI workers at Namapalli in Telangana's Hyderabad following the go-down fire, the police resorted to lathi charge to disperse the crowd. Earlier today, 6 people have lost their lives after a massive fire engulfed a chemical go-down on a floor of a 4-story building in Hyderabad. As India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get a glimpse of the Ram Lalla post-inauguration. The full story when we come back. Also, the UK Prime Minister has sacked Suella Braverman after remarks on the pro-Palestine protest. In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है, और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बता रहा हूँ तो पतंगे रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई यहाँ खिदमत पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नागर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Reporting
coming from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7 BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ने से सबने मन बना लिया शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी घर वापस कर दिए। Welcome back. Let's also get you more details. So what's been happening in the poll-bound state of Telangana? That's going to be voting on the 30th. But here is where you see that contest between the BRS, the Congress and the BJP. In fact, the BJP state president, G. Kishan Reddy, has slammed the Congress and the chief minister over the backward class declaration and minority declaration. He says that the chief minister has betrayed Dalits. मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, अब माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया और बीसी डिक्लेरेशन किया, एससी डिक्लेरेशन किया, क्यों डिक्लेयर नहीं करते बीसी मुख्यमंत्री को, एससी मुख्यमंत्री को? मैं तैयार हूं। मैं बीसी मुख्यमंत्री के नाते बीजेपी आया है और केंद्र में मैं 10 साल से सत्ता हूं। दुनिया में देश में सबसे बड़ा पार्टी है, अलग अलग देशों में मेरा पार्टी सत्ता में है। मैं आज ये डिक्लेयर कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तेलंगाना में मेरा पार्टी जीतने के बाद अगस्त 3 तारीख के बाद बीसी मुख्यमंत्री वोट लेगा। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलते? दम है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी साहस कर सकते क्या? केसीआर अभी तो भी बोलना चाहिए, मैं 10 साल गलती किया, दलितों को धोखा किया, मैं दलितों को अन्याय किया है, अभी मैं करता हूं। केसीआर साहस करते क्या? तेलंगाना में भी 16th और 17th, मेरे ख्याल से 17th को सुबह मैनिफेस्टो रिलीज होगा, नहीं तो 16th होगा। आदरणीय पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी दोनों में एक नेता आएंगे, वही तेलंगाना जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो खुलासा करेंगे। प्रधानमंत्री जी और 4 प्रोग्राम में आने वाले हैं। एक प्रोग्राम मेरे ख्याल से हम करीमनगर सोच रहे, एक निर्मल भी सोच रहे, एक मेदक भी सोच रहे और एक रोड शो। ऐसे 4 प्रोग्राम के लिए हम रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया है। So away from the poll-bound states, there is another debate that continues year after year. In fact, people say that if you live in Delhi and the NCR, you experience another season. Now that season is the smog / the toxic season where we just breathe toxic air. And who's responsible is a question that anyone who lives in the Delhi NCR region has asked year after year. We get zero replies. Now till the Aam Aadmi Party was not in power, it actually blamed the states of Haryana and Punjab. And now when it is ruling the state of Punjab, it says that crackers are to be blamed for what happened in Delhi. The AQ, I remember, has shot up to a whopping 900 plus. And the BJP now says that this is the Aam Aadmi Party that is targeting Hindu festivals. जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए।
एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो एक्यूआई की स्थिति और विकट थी। 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई पटाखे या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे, तब कैसे प्रदूषण था? और आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है। कल 900 घटनाएं हुई है, कुल मिलाकर 23,000 घटनाएं हुई है और इस कालखंड में उसका कंट्रीब्यूशन 40% से अधिक है, ये डेटा बताता है। परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। देखिए, अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए, आप उस पे पीछे मत छुपिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप ये सब जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो पराली सबसे बड़ा कारण था। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर आप चुप रहेंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय जी से कि जरा आंकड़े जारी कर दीजिए। 15-20 दिन पहले जो प्रदूषण का लेवल था दिल्ली का, जो 900 टच कर रहा था, और आज क्या प्रदूषण लेवल क्या है, जो हमारी जानकारी है 366 है। तो 15 दिन पहले तो कोई फायर क्रैकर्स नहीं चल रहे थे, तब क्यों कारण था? कारण सिर्फ एक ही है, आपकी नाकामी। 12 साल से आपने दिल्ली के अंदर एक भी बस डीटीसी की लेके नहीं आए हो, जिसकी वजह से व्हीकल एमिशन बढ़ रहा है। We are into a break right now. On the other side, high drama outside Gautam Singhania's residence as the estranged wife now claims that she was locked outside. Also, as India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get a glimpse of the Ram Lalla post-inauguration. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बता रहा हूँ तो पता नहीं रस्सी दूसरे खाने हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा, उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम दिया था, नहीं हो रहे हैं।
प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7 BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई नहीं लड़ने से। सबने मन बना लिया, शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे वो वैसी बी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। Hello and welcome. You're watching the biggest story tonight with me, Shavin Sen. Ladies and gentlemen, we're beginning with the top story coming in from the pole-bound state of Madhya Pradesh, where an alleged video has put a union minister in the spotlight. We'll get you all the latest and much more in this edition of Biggest Story tonight. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. Yet another India Alliance leader insults Sanatan Dharma. BJP hits out, slams Sanatan hate. A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers on pollution. Prime Minister Modi raises Mahadev scam, calls Bhupesh Baghel government hub of corruption. High drama outside Gautam Singhania's residence as a wife claims that she was locked outside. As India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get glimpse of Ram Lalla post-inauguration. Mega political face-off over viral video of Union Minister's son where he talks about cash deal. UK Prime Minister Rishi Sunak sacks Suella Braverman after remarks on pro-Palestine protest.
Well, starting the edition with news coming in from pole-bound state of Madhya Pradesh, where there's been a massive political storm in the state after a purported video of Narendra Singh Tomar's son has now gone viral. The BJP has called the video fake, but the Congress party is raising the video to fire a charge that cash deal about 500 crore rupees has been made. In fact, the Congress party is also now demanding that an enforcement directorate probe should be carried out in this particular allegation that has been leveled. What you see right now on your screens, this is an alleged video that has gone viral in which you can see Union Minister's son, Narendra Singh Tomar's son, asking for money. Now, there are two videos that are doing the rounds. The first video that came out in the open was on 5th of November, and it was posted on a social media platform by someone who's close to be former Chief Minister of Madhya Pradesh, Kamal Nath. Now, in that viral video, what turns out is that a person who's making this call, perhaps a video call to Union Minister's son, where they can be heard talking about transfer of crores of money from a mining and land businessman from Rajasthan and Mohali. In fact, the person is asking for details of 5 different accounts for the transaction to take place, in which the allegation is that Devendra was talking about financial deals of roughly about 100 crore rupees, then another transaction of about 18 crore rupees and 21 crore rupees with a person who's been seen talking to in that particular video about bank managers, how and when the money can be transferred from different accounts. Remember, this is one video that is surfacing now. Another video of Narendra Singh Tomar's son Devendra Tomar has once again gone viral, and now this time the minister's son is essentially seen making a deal worth roughly about 500 crore rupees. Now, the other person in this video is heard talking about a chartered accountant who's based in Chandigarh, and how they can roughly process about 50 crore rupees every week. In fact, there is a counter FIR that has been registered by Narendra Singh Tomar's son. In fact, Bharatiya Janata Party has also called this video fake. The Congress is now demanding that a fair probe should be carried out. Listen to some of the reactions that are coming. जगह से हमें दे देंगे अपना ट्रांसफर्स, ठीक है, और चंडीगढ़ से भी ठीक है। तो इनको क्या है भैया, उनके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है, नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है। तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया, और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज दो। हाँ, तो मुनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक, रखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। मनी का एक बार प्रॉपर हो जाए उसका तो अपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनी का मैंने आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं। राइट। ठीक है जी, तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ओके भैया। का काम जिसमें आपके बड़े पुत्र का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बाकी चीजों के बारे में ज्यादा समझ आया मत करो। का काम जिसमें आपके बड़े पुत्र का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बाकी चीजों के बारे में ज्यादा समझ आया मत करो। का काम जिसमें आपके बड़े पुत्र का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बाकी चीजों के बारे में ज्यादा समझ आया मत करो। Well, in fact, in the purported clip, Devendra Pratap Singh Tomar is essentially seen talking to a man over video call and discussing the moving funds, roughly about 100 crore rupees. Now, there is another call recording that is now doing the rounds, where the man is heard telling
Devendra Pratap Singh Tomar that his 18 crore rupees had been deposited in 4 different bank accounts. This video has emerged just before the state is all set to go to polls on 17th of November. Devendra Pratap Singh has now filed a complaint in which he has essentially said that the viral video has surfaced where it is falsely claimed that he had conducted transactions worth crores of rupees. He calls this a completely doctored video, which once again he alleges is part of a conspiracy to malign him and create a negative impression. Fake video clips that have been doing the rounds on various social media platforms and with the malicious intent of damaging his public image and reputation. In fact, we're now being told that the FIR has been registered and this is against an unknown person. Investigation is already underway is what sources within Madhya Pradesh police essentially indicated. The Congress party, however, has trained the guns at the union minister. The party says it requires a free and fair investigation, also demanding the arrest of Devendra Pratap Tomar. Let's listen in to some of the reactions that are now coming in. जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के कांग्रेस हथकंडे अपनाती है। फेक वीडियो पार्ट 2 आज जारी किया है। नरेंद्र सिंह जी के बेटे ने उसी दिन इस वीडियो के बारे में कंप्लेंट की है, एफआईआर की है और एफआईआर करने के बाद ये फेक वीडियो जारी करने का काम कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, न कांग्रेस के पास जमीन है। तो ऐसी ही चीजें क्या की जा सकती हैं जब ऑलरेडी उसने कंप्लेंट खुद की है और उसकी जांच जारी है, ये तो पता लग जाएगा क्या है और क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस केवल इन्हीं पर काम करना चाहती है। तो ये फेक वीडियो किसके हो सकते, किसकी साजिश हो सकती है? ये कांग्रेस जारी कर रही है तो यानी कांग्रेस बताए कौन है ये करने वाला, सामने लाए उनको। तो ये कुल मिलाकर के चुनावी समय में इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के ऑडियो ये नेचुरली लोग करते रहते हैं। कांग्रेस इसमें पारंगत है जो यही करती है। तो क्या इसमें जांच होना चाहिए वीडी शर्मा जी? सरकार अभी आपकी है तो जब खुद उनके बेटे ने जिनके वीडियो के बारे में कहा जा रहा है उसने खुद कंप्लेंट की है, एफआईआर कराई है, कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो तो खुद ही कह रहे हैं। तो ये मतलब कांग्रेस की साजिश हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? 100% यही काम है कांग्रेस के पास और कुछ बचा नहीं है। तो ये कांग्रेस की साजिश हो सकती है, ये भी वीडी शर्मा साहब दावा कर रहे हैं। अब आते हैं प्रदेश में संगठन की बात, क्योंकि संगठन का मोर्चा आपके पास है। संगठन को कैसे मजबूत करना है ये आपके कंधों पर है। तो संगठन में हमने ये भी देखा कि गृह मंत्री अमित शाह आए और संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्हें करनी पड़ी। तो सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान लिया था, 10 लाख बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। Well, on the one hand, the Congress party is demanding a free and fair investigation, and they say that this would not be possible unless the union minister's son is arrested by the police. In fact, BJP has now responded by saying that this is a fake video that is doing the rounds, and BJP MP chief speaking to Republic TV indicated that this was a fake video that was being circulated by the Congress party because they are perhaps nervous about the outcome of the Madhya Pradesh elections. Remember, the first video that was doing the rounds was largely being circulated by a few Congress members, in which in this video you could see a FaceTime call that was allegedly made and in which discussions about cash transaction was taking place. We'll also try and play out some more reactions that are coming in. Remember, with these videos that are now doing the rounds, the police too has stepped in. In fact, an FIR has already been registered against an unknown person and investigations are already underway. Narendra Singh Tomar also spoke to Republic TV, in which once again he reiterated that this was an attempt to malign the image of his son. And not just that, also remember, union minister is contesting in these upcoming elections, and that is the reason why he alleges that the Congress party is resorting to such means. In fact, the person who had put out this video, alleged video, happens to be the media advisor of Madhya Pradesh Congress and former Chief Minister Kamal Nath's media advisor. It is he who had put out the video on social media. In fact, the Congress party has now urged that
The video that is doing the rounds of the social media should be perhaps taken cognizance by the central agency, starting with the Enforcement Directorate, Central Bureau of Investigation, and also the Income Tax Department, where the Congress party is now demanding that they should verify the authenticity of this video that is doing the rounds. We'll try and see if we can get in some more reactions that are coming in. In fact, Narendra Singh Tomar, who's spoken to Republic TV, will try and put that out in a short while from now, where he once again reiterated the fact that this is a fake video. However, having said that, there's no official word that has come in from the Madhya Pradesh police that is already looking into the matter following a complaint that has been filed. For all our viewers who are tuning in right now, what you see right now on the screens is an alleged video, purported video, which has been doing the rounds. Two such videos have surfaced so far. The first video that came out in the public was on 5th of November, and earlier in the day, yet another video that has surfaced in which one can essentially see Narendra Singh Tomar's son, Devendra Pratap Singh Tomar, essentially talking about certain cash transaction, money that was supposed to come in from a businessman. In fact, in the second video that has been doing the rounds, Devendra Pratap Singh Tomar can be seen talking to a man over the video call and discussing moving funds worth about 100 crore rupees. बहुत स्पष्ट सी बात है कि ये जो वीडियो है इसकी जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए 500 करोड़ रुपए बहुत छोटी रकम नहीं है। इससे लाखों बहनों को सिलेंडर मिल सकते हैं, इससे लाखों बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल सकती है। 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। एक गाँव के क्लस्टर का पूरा संपूर्ण विकास हो सकता है। ईडी, सीबीआई और ये सब तो है ही, लेकिन चुनाव आयोग को इस बड़े मामले पर दखल देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और यथोचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम की बातचीत क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें लेन देन की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की सरकार पर हम जो 50% कमीशन का आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं इससे पुष्ट होता है। भ्रष्टाचार के आरोप भी इससे पुष्ट होते हैं कि जिस तरह से ये वीडियो आया है, तो ये तो एक या दो बार ऐसा वीडियो कहीं से रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद सामने आ गया, लेकिन ऐसे कई वीडियो होंगे और कई लोग होंगे जिनके वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुए, सामने नहीं आए हैं। तो भारी भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है और इस सरकार को जाना होगा। Shifting focus now to a global story that we have been tracking very closely with the UK Prime Minister, who's begun the major reshuffle in the cabinet, firing his controversial Interior Minister Suella. Sunak, in fact, fired the Home Secretary, who drew anger for accusing the police of being too lenient with pro-Palestinian protesters. Now, the government said that Braverman left her job as part of a cabinet reshuffle on Monday. Rishi Sunak was under growing pressure to fire Suella Braverman, a divisive figure popular with the authoritarian wing of the governing Conservative Party. But many also essentially arguing that whether at all UK Prime Minister has buckled under pressure, given the fact that Suella Braverman essentially questioned about the role of the police when it came to controlling pro-Palestinian protesters. On the other hand, a free hand has been given to the pro-Palestinian protesters. That's the allegation that was leveled by the Home Secretary, which of course drew a lot of criticism. In fact, there appears to be a complete U-turn that has been made by UK Prime Minister, who initially backed the Home Secretary, but later on decided to take a U-turn. Pathikrit Pen joins us on this broadcast. Pathikrit, perhaps a lesson that many here in India would like to draw from this entire episode. You have the UK Prime Minister who's completely buckled under pressure and has actually given in to what many have been arguing, that what has happened today in London is that you have pro-Hamas supporters out on the streets, the government not being able to rein in, and you're essentially giving jihadi elements a complete free run
in United Kingdom, and that is a reflection in the decision that has been taken by the UK Prime Minister of sacking the Home Secretary, whom at one point in time was seen as a close confidant of Rishi Sunak. Shravan, there has been a lot of such precedents in United Kingdom where double standards of the police have been evident. For example, if you look at the attack on the Indian embassy by the Khalistani elements, there was lack of alacrity on the part of the British police officials. At the same time, at the same time, if you see what has happened in case of post one of the matches in United Kingdom, there were attacks on the Indians, especially the Hindu communities. That time also the radical Islamists were let off. Similarly, in this case, yes, it is true that those who were outside, for this rally, they were extremely virulent, radical speeches and narratives that were being propagated. Look, nobody supports violence. Everybody supports that there should be mutually that issue of Palestine and Israel should be, sorted out. But if the objective of those who come out of the street becomes one, to create violence or to propagate violence, which is one-sided, if they try to whitewash what the Hamas has done and only pin the blame on the Israeli Defense Forces, then that is not going to help as so far as the internal security issue of United Kingdom is concerned. And let me tell you, from the time of ISIS, there has been a large number of such radicals which have, proliferated in United Kingdom. So, Suella Braverman, what she said, I think it was keeping in mind the internal security situation and how it is becoming volatile because of political correctness of the London Metropolitan Police or the British Internal Security Agencies at large. And I think there is a lesson for India, of course, in this, because on several occasions we have seen many political parties, their representatives on the issue of security, they would bring in vote bank politics, they would bring in minoritism, which does not simply help any democratic country. See, if you are a democratic country, you have to save the democracy. For saving democracy, you have to be upright. Unfortunately, it was lacking in case of United Kingdom, and I think it's a lesson for all democracies of the world, Shravan, whether it is in United Kingdom or for India. Back to you. Well, thank you very much, Pathikrit, for putting this into perspective. There's absolutely no doubt about the fact that there is a lesson for many to learn from this, not just in United Kingdom, but even for that matter in United States, where we've seen the US Congress being completely divided on this entire matter. Shift focus now to another story, but before that, let's just play out some of the reactions that are now coming in, and then we shift focus to a story that is coming in from the state of Uttar Pradesh. Privileged to serve as Foreign Secretary, and in that time I worked very closely with my colleagues in the Home Office, cracking down on illegal migration, reducing the number of small boat arrivals, and now as the Home Secretary I'm absolutely committed to stopping the boats as we promised, but also making sure that everybody in the UK feels safe and secure going about their daily business, knowing that the government is here to protect them. So it's a fantastic job and it's a real privilege to serve. Thank you very much. And do you want to distance yourself from the rhetoric of the previous Home Secretary? Well, I intend to do this job in the way that I feel best protects the British people and our interests. I have had a very good conversation with the Prime Minister, who's made it very clear that he wants us to deliver on our promises, to stop the boats, to protect the British people, make sure everybody feels secure in their lives. Thank you very much. जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, तो जनता आपको जवाब देगी। Yet another India Alliance leader insults Sanatan Dharm. BJP hits out, slams Sanatan hate. ये जो घटना हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है।
A day after Diwali, political parties face off over impact of crackers and pollution. All this and much more on the other side. In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. पतंगे रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नगर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था महीनों लगे। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ने से सबने मन बना लिया शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापिस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे वो वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। Reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has yet again pushed back against calls for Gaza ceasefire, saying Israel's battle to crush Gaza's ruling Hamas will continue. According to Netanyahu, Israel has been committed to protecting civilians, and civilian deaths should be placed squarely in the responsibility of Hamas for keeping its military installations inside hospitals. Images taken by satellite show the scale of devastation around Gaza's largest hospital as the fighting between Hamas and Israeli troops intensifies. Before and after images released by Maxar Technologies show the extent of damage that has been caused by Israel's bombardments around Shifa Hospital. Israel has informed some people have been evacuated from Shifa Hospital.
In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है, और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बता रहा हूँ तो पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे, सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नगर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था, महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7 BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ने से सबने मन बना लिया, शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी, घर वापस कर दिया। Viewers, it's time for Superfast 50. I'm Shivangi Shukla. Let's get started. Yet another indie bloc leader has insulted Hindus. This time, SP leader Swami Prasad Maurya quoted controversy on the day of Diwali with his remarks questioning how can goddess Lakshmi be born with 4 hands when humans have never had more than 2 hands. हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है।
The remarks have triggered a massive row with anger mounting in the Hindu community over Maurya's insult to goddess Lakshmi. The Hindus are now saying that he should be dealt with strict action. तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं। स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं है। ऊल जुलूल पागलपन रोज आए दिन बयान देते हैं, वो भी बिना समझे कुछ देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। Slamming Indie bloc leaders for yet again insulting Hindus, BJP said that the Indie alliance leaders are against Hindus. चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। और दुख की बात यह है कि जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस नेता का जो वक्तव्य आया है इसकी हम निंदा करते हैं। On campaign drill in Chhattisgarh, PM Modi raised the Mahadev betting scam and launched an unrelenting attack on the Baghel government. महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। Hitting out at Chhattisgarh, Chief Minister over his alleged Mahadev betting app scam, BJP warned that Baghel's days are about to end in the state. भूपेश बघेल जी को भी अगर ये गलतफहमी है कि वो कानून से ऊपर हैं या गांधी परिवार उनको बचा लेगा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप किसी भी संवैधानिक पद पे क्यों ना बैठे हो, घोटाला करने का हक कोई संवैधानिक पद आपको नहीं देता है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। A fresh face-off has erupted over pollution as Delhi Minister Gopal Rai has now said that Diwali celebration is the core reason behind the worsening air quality. पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था। उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए। Meanwhile, heading back, the BJP has now asked Aam Aadmi Party to stop targeting Hindu festivals. The party has further alleged inaction by Aam Aadmi Party over years to tackle Delhi pollution. आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। Congress is at it again, hitting a new low. Congress has now criticized Prime Minister's Diwali celebration, with soldiers calling it a poll gimmick and further raising questions over the surgical strike. प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मंदिर उनका चुनाव है। मंदिर को न सिक्योरिटी को किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं
और कितना सिक्योरिटी कर्मचारियों अधिकारियों को या जवानों को मारा जा रहा है, पुंछ में, रजौरी में, वैली में और यहाँ तक कि मणिपुर में भी, तब भी वो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। Heading out at the grand old party, the BJP has now said that the Congress is against the country and the forces and wants to play politics over every single thing. The Congress members is that, and the Congress leaders is that they can't think beyond dynasty. For them, family is Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Vadra. Whereas for PM, every Indian is part of his family, and especially the armed forces, people who defend India and people who are at border safeguarding our interests. So for him, they are the family. But for congressmen, the Gandhi family is the family. Uttarakhand government has continued its operation to rescue 40 workers trapped after an under-construction tunnel collapses in Uttarkashi. A report from the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited said that the tunnel had been reached by 21 meters. Meanwhile, Uttarakhand Chief Minister has assured full support as he visited the collapse site. जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के ज़िले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और NDRF, SDRF सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ। Well, in more update coming in, the feud in the Singhania family is yet again out in the open as a video has emerged showing Nawaz Modi Singhania, business tycoon Gautam Singhania's estranged wife, allegedly being locked out of the Singhania Diwali party. In the video, Nawaz can be heard saying that she was standing outside Singhania's property in Thane. As mega preparations are underway for the grand Ram Mandir inauguration, the VHP president has now said that RSS chief Mohan Bhagwat will be attending the Mandir inauguration. There will be more than 4,000 saints at the inauguration. The Mandir will be open for people from January 23rd. पहला कार्यक्रम तो 22 जनवरी का है। इसमें हमने विश्व के लोगों से कहा, अपने पड़ोस के मंदिर को अयोध्या मान लो और वहां पर सामूहिक रूप से देखो। घर से कोई नहीं देखेगा, बच्चे बड़े बूढ़े सबको मंदिर में आके देखना है। मेरा अंदाजा है कि 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में कम से कम 7 करोड़ या उससे अधिक हिंदू प्रत्यक्ष राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को देखेगा। Actor Sahil Khan has been booked by Mumbai police in the Mahadev betting app case. This is the first time the Mumbai police has booked any actor in the alleged betting case. In a huge step to empower tribals, Prime Minister Modi will be launching particularly vulnerable tribal groups development mission on 15 November. The first of its kind mission since independence, Modi government has launched a rupees 24,000 crore scheme to ensure holistic development. NCP Mumbai busts international drug syndicate with the pan-India network, arrest one Zambian national with 2 kilograms of cocaine at a Mumbai hotel and also arrested a Tanzanian woman in Delhi. The value of the recovered drugs is around rupees 15 crores. Sources have now suggested that Delhi LG office has received a request from the CBI to probe extortion charges against former Delhi Minister Satyendar Jain. The former minister allegedly took protection money from various prisoners, including money laundering accused Sukesh Chandrasekhar. 9 people have been killed after a fire broke out in a chemical godown. The massive fire engulfed a chemical godown on the first floor of a 4-story building at Nampally in Hyderabad earlier today. Several fire tenders rushed to the spot and the blaze was brought under control after hours of dousing efforts. IT officials raided premises linked to Satyendar Reddy's relatives. The income tax sleuths searched the residence of Pradeep, who was allegedly a close relative of the minister. In 2018, Reddy contested elections from Maheshwaram on a Congress ticket and won in spite of a TRS wave in the state. A bullet pierced through the wooden window frame of an IAS officer's residence in Chandigarh on the night of Diwali. Police said the source of the firing is yet to be ascertained and added that it is probing the possibility of celebratory
conspiring behind the incident. A woman working in a homestay in Agra has allegedly been gang raped, and 5 people, including a woman, have been arrested for it. A purported video of the woman crying for help has now surfaced. Apart from rape charges, attempt to murder charges have also been slapped against the accused. Telangana BJP President Kishan Reddy has slammed Congress and CM KCR as it dared both the parties to appoint OBC Chief Minister if they come to power. He further attacked KCR for betraying Dalit community in every election. को पूछना चाहता हूं, अब माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया और बीसी डिक्लेरेशन किया, एससी डिक्लेरेशन किया, क्यों डिक्लेयर नहीं करते बीसी मुख्यमंत्री को, एससी मुख्यमंत्री को? मैं तैयार हूं। मैं बीसी मुख्यमंत्री के नाते बीजेपी आया है और केंद्र में मैं 10 साल से सत्ता हूं। दुनिया में, देश में सबसे बड़ा पार्टी है, अलग अलग देशों में मेरा पार्टी सत्ता में है। मैं आज ये डिक्लेयर कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तेलंगाना में मेरा पार्टी जीतने के बाद अगस्त 3 तारीख के बाद बीसी मुख्यमंत्री वोट लेगा। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलते? दम है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी साहस कर सकती है क्या? According to reports, BJP is likely to release a manifesto on 16th or 17th November. Now, the manifesto would be released either by the JP Nadda or by Amit Shah. Also, in the coming days, Prime Minister Modi is expected to hold 4 to 5 public meetings, including a roadshow in the state. Telangana Chief Minister and BRS Chief K. Chandrasekhar Rao at the same time campaigned in areas in Telangana where he recounted the amount of development witnessed by state during his regime. Amid a clash between the Congress and the AIMIM workers at Nampally in Telangana's Hyderabad following the go-down fire incident, now the police resorted to lathi charge to disperse the crowd. Earlier today, 6 people have lost their lives after a massive fire engulfed a chemical go-down on the first floor of a 4-story building in Hyderabad. And a huge setback to the Congress. The BJP has now reached Election Commission against Kamal Nath, alleging communal comments, and has demanded that his election rallies be banned. Meanwhile, Congress leader Rahul Gandhi has promised to implement caste-based census in Madhya Pradesh if they come to power. This comes while he was campaigning in Madhya Pradesh's areas just ahead of the assembly elections in Neemuch. मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। Taking a joy by the Congress Union Home Minister Amit Shah said that this time there will be 2 camps in Madhya Pradesh. One camp has Vijay Singh and Kamal Nath, and the other camp has PM Modi, Shivraj Singh Chauhan, Narendra Singh Tomar, and Jyotiraditya Scindia. During the public rally, he said it's on voters which camp they would pick. दो खेमे स्पष्ट है। एक खेमे में श्री दिग्विजय सिंह है, जानते हो ना, जानते हो ना, और कमलनाथ है, और दूसरे खेमे में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। Meanwhile, on the campaign trail, Union Home Minister Amit Shah has promised to have voters seek darshan of Ram Lalla free of cost if they win to power in Madhya Pradesh. While addressing a public meeting, Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan ensured women development in the state, has listed the schemes launched by his government for women development during his 5-year tenure. ये दर्द मैंने समझा था मेरी बहनों से, मेरी जिद थी कि अपनी बहनों के खाते खोलूंगा और उसमें पैसा डालूंगा जो पैसा मेरी बहना का होगा, जब चाहे तब वो खर्च करे। और इसने लाडली बहना योजना बनाई। वैसे हर महीने 10 तारीख को पैसा डालता था। इस बार दिवाली, धनतेरस, सब थी तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिया बहनों के खाते।
कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी। चुनाव आयोग की चिट्ठी अभी नहीं डलना चाहिए, पहले से ही सवालिया निशान लगा रहे थे, रिक्तों को थोड़ी मिलेगा, रिक्तों को थोड़ी देंगे। Addressing a rally, Madhya Pradesh CM lashed the Congress and said that the Congress spreads confusion and are dishonest. He warned the people to not get fooled by them. It is the Congress that is stopping the schemes which the BJP started for the benefit of the public. याद रखना, ये झूठी और बेईमान कांग्रेस, ये भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोज झूठ बोलते हैं और रोज मुझे ही गाली देते हैं। सपने में भी मैं ही आता हूँ, मामा ने ये कर दिया, मामा ने वो कर दिया। Netanyahu has yet again pushed back against calls for Gaza ceasefire, saying Israel's battle to crush Gaza's ruling Hamas will continue. According to the Netanyahu government, Israel has been committed to protecting civilians, and civilian deaths should be placed squarely in the responsibility of Hamas for keeping its military installations inside hospitals. The relatives of some of the 239 hostages kidnapped by Hamas appeared at Israel's Parliament State Control Committee on Monday. Now, the relatives of the hostages demand for immediate release of their loved ones. Hamas is holding nearly 240 hostages, including men, women, children, and the elderly. Israeli aircraft and ground troops have carried out 4,300 attacks in the Gaza Strip since the war began 5 weeks ago. Targets have included hundreds of anti-tank rockets, launchers, 300 tunnel shafts, more than 100 booby-trapped buildings, and hundreds of Hamas war rooms and command centers. Israel military released footage on Monday showing what it claimed were dozens of weapons and military devices in the Gazan maritime region belonging to the Hamas terrorists. The recovery has been made in underwater search. These weapons have allegedly been used by the Hamas terrorists in their attempts to infiltrate Israeli territory. Images taken by the satellite show the scale of devastation around Gaza's largest hospital as the fighting between Hamas and Israeli troops intensifies. Before and after images released by the technologies of Maksar show the extent of damage caused by Israel's bombardments around the Shifa hospital. Israel has informed some people have been evacuated from the Shifa hospital. Footage released by the Israeli Defense Ministry in November showed the Arrow missile defense system being used during the ongoing war between Israel and Hamas. The system was used operationally for the first time during the conflict to intercept missiles over the Red Sea. This comes after Iran-backed Houthi rebels have launched missiles at Israel's southernmost city of Eilat multiple times. Palestine's Prime Minister has rejected the establishment of temporary camps for displaced Palestinians in Gaza and called for the return of those forcibly displaced to their homes. Speaking during a cabinet meeting in Ramallah, he added that in the history of Palestine, there is no such thing as temporary, and experience has taught us that the temporary is only permanent. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, during a news conference with the Southern Korean Defense Minister in Seoul on Monday, discussed the U.S. military airstrikes on 2 locations in eastern Syria involving Iranian-backed groups. According to the Pentagon and U.S. officials, the U.S. military has hit a training location and a weapons facility. Iran says it will continue political and spiritual support for Palestinian groups. Iran has said that it would continue to support Palestinians politically and spiritually, and insisted that these groups have enough military power to fight Israel. Now, Iran is considered Hamas's main sponsor, but the US says it has not seen direct evidence Iran was involved in the group's deadly incursion into Israel on October 7th. EU foreign ministers have gathered to discuss Israel and Ukraine war. EU Foreign Affairs Chief Joseph Borrell said that bloc asked Israel for maximum restraint and targeting in order to avoid human casualties. The German foreign minister on Monday stated that Germany's support for Ukraine would continue and warned that Russian President Vladimir Putin was rejoicing too soon if he thought that the Israel-Hamas war could draw support away from Ukraine. British Prime Minister Rishi Sunak has fired Home Secretary Suella Braverman, who drew anger for accusing the police of being too lenient with pro-Palestinian protesters, as the government said Braverman left her job as part of a cabinet shuffle on Monday. British Prime Minister Rishi Sunak on Monday appointed James Cleverly as Interior Minister, switching the 54-year-old from the role of Foreign Secretary, which he had held
for a year. Meanwhile, former UK Prime Minister David Cameron has now been appointed as the UK Foreign Secretary. The police service in Canada has released a photo of an SUV and surveillance video of two suspects in last week's fatal shooting of a gang member and his 11-year-old son, who was gunned down while parked outside a fast food restaurant. Nepal has become the latest country to ban TikTok. The decision to ban the Chinese-owned apps comes in cabinet meeting. According to the government, decision comes due to the increase in cyber crimes. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin emphasized its country's commitment to its allies in Asia and the Indo-Pacific region during a news conference with South Korean Defense Minister Shin Won-sik in Seoul on Monday. He added that the recent U.S. military buildup in the Middle East in response to the latest Israel-Hamas war will not compromise its strength in the Indo-Pacific region. Floods caused by torrential rainfall have killed at least 31 people in various parts of Somalia. As per government, since October, floods have displaced nearly 500,000 people and disrupted the lives of over 1.2 million people. Activists protesting corporate profits, environmental abuses, poor working conditions marched in downtown San Francisco on Sunday, united in their opposition to a global trade summit that will draw President Joe Biden and leaders from nearly 24 countries. Republican presidential candidate Tim Scott has ended his 2024 bid for president in a move that surprised his donors and stunned his campaign staff. The decision comes as Scott continues to struggle in the polls in a field dominated by former President Donald Trump. Los Angeles motorists should expect traffic snarls during the Monday commute as crews assess how much damage was caused by a raging fire over the weekend that closed a major elevated interstate near downtown. Commuters were urged to work from home or take public transportation into downtown Los Angeles. बता रहा हूँ तो पतंगे रस्सी दूसरे खाने हो रहा हूँ ना, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था महीनों लगे। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते। सबने मन बना लिया शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी घर वापिस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे और वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। Reporting
reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं, खरीद सकते क्या? हम लोग पूरा चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज हो रही है, वो पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है, और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बता रहा हूँ तो पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नागर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था, नहीं हो रहे हैं। हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Reporting from the south of Israel, and we have with us the recovery that has been made by the Israel Defense Forces. That these are the launchers that are made in Russia. These are the RPG-7BR launchers that are made in Russia, in Gaza, as well as in north of Korea. These are some of the Chinese grenades and the other grenades that have been recovered by the Israel Defense Forces. These were the drones. These are roughly 10 kilogram in weight, and they are the suicidal drones that are being used. Question powered by Sarah. जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी।
Yet another IND alliance leader insults Sanatan. The BJP hits back. It's a day after Diwali that you have political fireworks going off in the national capital, and the big question is, who's responsible for the air we breathe? महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। That is the Prime Minister raising the Mahadev scam in Chhattisgarh. He calls Baghel government a hub of corruption. High drama outside Gautam Singhania's residence as the estranged wife now claims that she was invited for the party but she remained locked outside. And as India counts down to the mega Ram Mandir inauguration, devotees to get a glimpse of Ram Lalla post the inauguration. There is a mega political face-off over a viral video of Union Minister's son where he's talking about a cash deal. And the UK Prime Minister Rishi Sunak has sacked Suella Braverman after remarks on pro-Palestine protest. A very good evening. The show's called The Burning Question and I'm Deepthi Sachdeva. We are in the middle of the festive season, but let's not forget the political season. Now, there are a number of states that already have begun to vote and a few of them will be voting. And on the 3rd of December, we will know which side has the edge. Will the BJP be able to buck the anti-incumbency trend in a few states where it does rule in power? And what about the Congress? Because this is a fight of prestige and survival also for the Congress. Now, one of those states that many say is best placed right now for the Congress to win is Chhattisgarh. Chhattisgarh, that is voting in two phases. A phase already, remember, has voted and another phase is voting on the 17th. And I want to bring the key characters on the screen for you to help you understand what really is at stake for whom. Now, the man is Bhupesh Baghel. He's an OBC leader. He was absolutely no one some years ago. But the moment he started ruling the state of Chhattisgarh, Congress insiders say a lot has changed for the party. The party is gaining a lot of traction. He's become a powerful regional satrap today in his own right. And a number of things that go to his credit, that includes thinking about the welfare of the farmers, of the Chhattisgarhiya pride, is basically what are his calling cards. But this time around, he's laying a special emphasis to talk about women, the women voters. And on the other side, you have Prime Minister Modi and you have Amit Shah, and these are again the faces, the star campaigners of the BJP, leading the fight to ensure that the BJP somehow comes to power in the state. But then a lot is changing. You know, we are talking of the women voters. The Prime Minister earlier today was in the state. He is hit out at Bhupesh Baghel. He's made out a direct charge at Delhi, at the quote-unquote Delhi Darbar. Now, is that a direct reference to people like Sonia Gandhi? Many say possibly yes. But before I tell you more about that, remember, why do we see women voters on our screens? Just 24 hours earlier, Bhupesh Baghel, the sitting Chief Minister of the state of Chhattisgarh, has announced a huge scheme, what many say could be a game changer for women in his constituency. Now, he says that I promise to give 15,000 rupees every year. 15,000 rupees every year to all married women. You don't need to enroll, you don't need to fill forms, you don't need to stand in queues. If you're a married lady in Chhattisgarh, he says, and the Congress comes to power, you are getting that money. Now, why has he made that announcement right in the middle of this election? Is this a violation of the Model Code of Conduct?
And does this betray the Congress's own nervousness? Or Bhupesh Baghel only wants to consolidate his hold over the women voters? Now let me quickly tell you what happened before we get you more details also on our screens. Just about few days ago, the BJP released its manifesto, and in that manifesto, the BJP also for the very first time has talked of a cash incentive for women. 12,000 rupees is what they promise. So Bhupesh Baghel goes on to talk of a 15,000 rupees for women. But look at why the state today is important and what is it that the Prime Minister has raked up against Bhupesh Baghel that could just be the wild card. Now, Prime Minister Modi today says the countdown for the exit of Bhupesh Baghel has begun. So that is the countdown attack on the Congress. He also targets Bhupesh Baghel over the Mahadev app row. This same Mahadev app, you've seen the sting here on Republic, and this is the same scam where allegedly the Enforcement Directorate says that more than 500 crores has gone in for the Chief Minister, and he possibly has used that for election funding. Now, again, that's a charge that Bhupesh Baghel says it's only vendetta. They are targeting me because they are getting weak. So Bhupesh Baghel woos the women voters. He promises a 15,000 rupees aid. And like I said, Chhattisgarh is one of the states in the country where you have more number of women voters in comparison to men. And clearly, if you have a better turnout of women, they impact the results. And this is something, again, that history has shown us. Let's bring the next graphic on our screens. All this is happening also after the BJP announced a lesser amount for women voters. 20 seats, like I said, have already voted in the first phase. Chhattisgarh has 90 assembly seats. There are 70 more to go in the state of Chhattisgarh. So the question we are asking, who has the edge? Why has Bhupesh Baghel spoken about a women incentive, the Grey Lakshmi scheme, right in the middle of the election season? And the BJP there says that the Mahadev betting app scam, the links directly go to the Chief Minister's doorstep. And this brings us to the final question that we've asked again and again. Whenever you have a Chief Minister who appears confident, but then in the middle of an election season, he will give an announcement like this, people will ask, is Bhupesh Baghel getting jittery? Is the Congress losing confidence in its own men? And that's the reason why you have them making an announcement like this. Is this freebie? Is this revdi? Is this empowerment? No one knows. But the story has developed interestingly. Chhattisgarh, an important state, tribal-dominated state, lot of women voters, lot of focus on Kisan, on the Chhattisgarhiya pride, and the Mahadev betting scam. Sit back and watch how the story has traveled, the reactions we've heard so far, and why the Union Home Minister says the Congress is wiped out in the phase 1 of these elections. तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। कांग्रेस की काली कमाई से कमाए गए नोटों के ढेर हर दिन निकल रहे, देखते हैं ना टीवी में। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर आया हूं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है। So in the same state where everyone said the Chief Minister is best placed to win this election for his party, in that same state, why in the middle of 2 phases do you have Bhupesh Baghel making that big Diwali announcement for women? Is that him being jittery, or there is more to that story? Let's say good evening to our panel of guests joining us. Shazia Ilmi is the spokesperson of the BJP with us. Amitabh Tiwari ji is a political analyst, and he has a very strong grip on numbers, on data, on a lot of number crunching that he'll help us understand the importance of women voters in these elections.
Shirish Mishra ji is a senior journalist and he is appearing on The Burning Question for the first time. Good evening, Shirish ji, to you, along with Ravinder Dhul, who's also a political analyst. He leans towards the Congress. Akash Deep Muni is also a political analyst. He leans towards the AAP. So let's begin with asking Ravinder Dhul ji the first question that everyone is asking. Ravinder ji, is Bhupesh Baghel getting underconfident? If he is so, confident about his numbers, of the Congress having done well in the first phase, why has he announced this scheme for women and increased the dole to a 15,000 rupees per year right in the bang of these two phases? And isn't this a violation of the Model Code of Conduct? See, insofar as the declaration and announcement by Mr. Baghel is concerned, we must note that every political party and every political leader does it from time to time, and they keep such type of announcement with them to be announced at a later stage. Insofar as the violation of the Code of Conduct is concerned, the place where the voting is going on, there is no such announcement. But in another place, if there is, then it is for the Election Commission to see upon the complaint by any political party or any political person or any contestant. Insofar as the announcement is concerned, definitely it is something which is to be taken note of, and how he has actually performed, not for women, but you can see how he has performed and how he has made announcement for the girls, for the students. We have a lot of public videos and public rallies when he has spoken directly with the person. That is why he has basically interacted with the people of Chhattisgarh from time to time. And this is how... No, Ravinder ji, my question is a little different. You are saying Bhupesh Baghel has done a lot for the women electorate in his state. Okay, I accept it. But I'm saying, when you are having the phase 1 that has concluded, you are going towards phase 2, unless Bhupesh Baghel really believes that something has changed, Amitabh, for him, why has he made this announcement? He could have made this announcement before the beginning of the first phase, or it's a checkmate to the BJP also that has announced for the very first time a significant dole for the women, Amitabh, in the state of Chhattisgarh. See, essentially the women voters are more in number the turnout also was more by 2.5%. Yes, that question is for Amitabh. Ravinder ji, I will come back to you. Okay. Yes, Amitabh. So women voters are more in number, as you've mentioned, and the turnout also was more by 2.5% in 2018. So it has a double impact. Normally, Chhattisgarh is known for having influence of farming community, which is around 80% people are dependent on it. So we have seen the paddy and the farm loan waiver promises, etc. by various parties. Now, since Congress had announced its manifesto before the BJP, if I'm not wrong, and with the BJP playing this card of announcing 12,000 rupees for the women, Congress now feels that this segment of voter could get lured by this vote and has come up with an announcement to neutralize or counter this promise of BJP. Now, Chhattisgarh has always been a close election. If you see 2003 to 2013, all the three elections were very close in terms of vote share, 0.7% to 2.5% sorts. Only 2018 was a landslide because the JCC, the Ajit Jogi's party, played a spoil sport. Now, with this party weakening as votes, it is bound to be again a fairly close contest, and all parties take stock of the situation after the phases. So maybe Congress has taken a stock of the 20 seats where the polling has happened and could have some ground reports, because they had swept it last time, 17 out of 20, could have some ground reports that for the probably is not that well, and has come up with this announcement to neutralize the impact. Okay, interesting that you say that. And, one has to also talk of the Mahadev betting app scam. The Prime Minister has raked that up earlier. He's spoken of a Delhi Darbar that possibly has got the benefits of this. But before we go into that, with Shirish ji and Akashdeep, Shazia, the BJP is against freebies, revdies. But in the state of Chhattisgarh, the BJP doesn't have a problem in announcing this dole for women. I mean, it's the same formula being adopted by Shivraj Singh Chauhan in Madhya Pradesh. Bhupesh Baghel is copy-pasting that formula. Can you really complain, Shazia?
No, the problem is using the idea of giving benefit to the women to cover up massive corruption. So BJP has an issue with that, and that is what we are highlighting. Now, if you look at the figures, it is thousands of crores. Now, where is this money coming from? Where is it going? Mahadev app, you just look at the details of the case, it just makes you sit back in complete shock. 508 crores is what we are discussing now. That is a basic figure. Imagine the actual number. So why is Chhattisgarh? But Shazia, that's an allegation. No, that's an allegation. There is still no money trail we are talking about. No, it's not an allegation. No. There is there have been raids. Money has been found. There are swaths and swaths of cash. But the money that has been recovered is just a little over 5 crores. 10 crores in the other. Yes, but when you do investigation and you find out, they're talking about 508 crores has been in play. Okay. And that is what they're trying to find out as to where has this money come from. And how is this, who are the people? There are actual names given, and if you read the reports and in greater details, you will realize that people who have been raided are actually giving not just records of the same, but that is the kind of money we're talking about which has been given for as bribes. Not about also the total amount or volume of the profits or the game that the online gaming involves. So that's a very big number. And you just see who these people are. How have they become so big? Where are they living? So those are real matters. And even why would there be even 5 crores? And this has been going on. And by the way, if you were to say that this is happening during the time of election, let me tell you, the matter opened only 1.5 years back. And since then, there have been so many, not just recoveries when you look at seizing these or raiding these, but also a lot of money being in play. The money has been used. The money has been transported. The money is being used for political propaganda. You don't know what, but this is the kind of money that is in play, is what I'm talking about. Okay. Shazia has also very conveniently sidestepped the question about women voters, giving them freebies and doles. But quickly, Shazia, before I get in, both Shirish and Akashdeep, who haven't spoken yet, if you can give this amount to women in the state of Chhattisgarh, why don't you promise this to women in Telangana? Why don't you promise this to women in the other states also? I mean, women across the country should be getting that money then from the BJP. So let me... So whenever BJP has... So BJP wants to balance its economics and its politics in a very systematic, calibrated manner. Now, if there is a need for women to get this, there would be a proper... It won't just be a pre-election SOP. There would be a rationale, economic rationale, just like there is that all the money that is going for the ration, for the PDS scheme is being now, and it's not affecting. Is this Revdi? Is this Revdi like the Prime Minister says, Shazia? Pronounces when BJP promises something like that, BJP will also tell you the blueprint and how will the state ensure this to come from and from which sources, instead of just announcing it only because BJP has announced it. And the very fact that Chhattisgarh, this promise and Akashdeep can relax. He can actually relax because, the Aam Aadmi Party that he bats for on most of the shows is perhaps the, first party that began these doles. Free mein ye dena, free mein wo dena. Corruption charges par shant ho jana, much like other political parties. But Akashdeep, before you come into this, I have to get a sense from Shirish ji, who's a local journalist, and he has a lot of insight into whether the Mahadev betting app scams are this time. Do you believe that's going to be the wild card? The BJP says that could just decimate the chances of Bhupesh Baghel. Leave aside the fact कि वो अगली बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो एमएलए का चुनाव भी हार जाएंगे. Is what the Prime Minister says. देखिए, Amit Jogi is the key person nowadays, and his party makes a difference in this assembly election. 81 candidates are in the fray, and what Amit Jogi is doing, he is contesting from Patan, where Bhupesh Baghel is also in the fray. So Amit Jogi makes this election, especially Bhupesh Baghel election, very interesting.
यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से अमित जोगी ने पूरी चीजों को कांग्रेस के लिए बहुत खराब कर दिया. That is the reason Prime Minister is saying in महासमुंद and other जो उनकी सभाएं हैं उसमें कि भूपेश बघेल is going to lose the election. That is not the fact, but I think जो उनके बीच का डिफरेंस है, वोट का डिफरेंस है, वो बहुत कम हो जाएगा. Because Vijay Baghel is his family member, they come from the same family, and विजय बघेल ने उनको 2008 में भी चुनाव हरा दिया था. That is the reason. और जब लोकसभा चुनाव हुआ 2000, लेकिन शिरीष जी समय थोड़ा कम है, मुझे आकाशदीप के पास भी जाना है. मुझे ये बताइए सर, ये जो महादेव बेटिंग ऐप स्कैम को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पता नहीं ये पैसा कहां गया है, कहीं ये दिल्ली दरबार तो तक नहीं पहुंचाया गया. क्या वाकई में आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड इस पूरे मुद्दे को लेकर वोटर अफेक्ट होता है, या जो उसके जमीनी मुद्दे होते हैं, रोटी पानी और बाकी दिक्कतों के, वही उसके दिमाग में रहते हैं? देखिए, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी. तब तक महादेव ऐप को लेकर जो आरोप लगे थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले ये घटना हुई थी. 508 करोड़ का जो ईडी का प्रेस नोट था उसमें रिवील किया गया था कि ये वहां तक पहुंचाया जा रहा है. लेकिन जो सेकंड फेज का इलेक्शन आने वाला है उस तक ये लोगों तक पहुंच चुका है. एंड नाउ इट बिकम ए टॉक ऑफ द टाउन एवरीवेयर, स्पेशली इन द प्लेन्स इन छत्तीसगढ़. Okay, that's an important point. That's an important point, Ravinder ji, that Shirish ji is making, and that's the reason why the Prime Minister today has spent so much time talking of this entire scam. And perhaps Shazia has a point where she says that 508 crore that possibly has gone into the Chief Minister could become difficult for him to defend. But Akashdeep, this in on and all, if you look at the big picture, it could entail the fact that the more corruption issues that are talked about, the BJP rakes up these corruption issues, there is cash that is recovered, there are raids that happen. Akashdeep, playing the victim card again and again will not help. If there are skeletons in your closet, you will have to be answerable for them, Akashdeep. Dipti ji, the most interesting factor in this particular case, not in the Delhi case, but in this particular case, is that Asim Das, who has been accused by the ED, has close links with the Bharatiya Janata Party. And any leader, any person who has the grassroots knowledge in Chhattisgarh knows about it. Can you prove that? Shazia ji. Can you prove that? I'm not saying that. You're making a charge, Akashdeep. You're making a charge that Asim Das is linked to the BJP? I'm nobody to make a charge. Then what are you saying? So by the very same logic, please ask. Arey ma'am, listen to me. The Chief Minister himself, Baghel ji himself, has said this, and he has said that he will be putting data in coming times that Asim Das is linked with Bharatiya Janata Party. Even the vehicle which has been taken in by the ED has links with people in Bharatiya Janata Party, and this will come while the phases of elections goes on. So, you don't condemn corruption. You do not say we should have a full inquiry about this. You're looking at alibis in situations that have not even happened, Akashdeep. Do you think that the people of the country are fools? They don't watch anything. They don't know anything. Are we taking them for granted, Akashdeep? No. Again, the analysis that has been done in the Delhi is very different and done in Raipur. Why I'm saying this is that because the first phase has gone to the Congress party, and the upcoming phases will be going to the Congress party. You remember last time the 39 seats from the SC/ST belt. But Shirish ji just said कि Mahadev ऐप स्कैम को लेकर उन्होंने ये कहा कि मैदानी इलाकों में अब उस बात की चर्चा होने लगी है, और शायद इसलिए कांग्रेस नर्वस है, और शायद इसलिए भूपेश बघेल ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया है ना. ये बात उन्होंने सही कही कि चर्चा हो रही है, और ये भी चर्चा हो रही है कि क्यों जो अक्यूज्ड का वीडियो क्यों भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन लेके आते हैं, क्यों एक दिन पहले. ठीक है आपको दिक्कत है कि वीडियो लीक कैसे हुआ, बीजेपी के पास वीडियो कैसा पहुंचा. I have completely run out of time, Shazia, but 10 seconds. Shazia, 10 seconds. The last 10 seconds to you. 10 seconds, Shazia. No, this is very important. So not only are there Benami accounts of the app,
and with a total balance of 15.59 has been frozen. ED has arrested Mr. Das, and it's Mr. Das's accounts that we are learning from. Now, if Mr. Das, as a friend just now says that has anything to do with BJP, you should be very happy about the ED investigation. If you think Mr. Das is linked to BJP, then what is the problem? Then it's all the more reason that you should be happy that ED raids are happening. On the one hand, you say that ED raids should not be happening and there are political witch hunt. On the other hand, you say, oh, this person is linked to BJP. And also, Shazia, why should there be any money trail or transactions why did or any it kind of reach the cash BJP? recovered? How did it reach the BJP? And a lot of other things. A lot of other things have happened so far. But yes, this is just the beginning, I think, of a lot of charges versus counter charges, Shazia, that we will see in the run-up to these elections. Vested parties. Yes. Yes, vested parties. So, Shazia, we should wait for a thorough investigation by the ED. During elections. Yes. These are allegations. The ED is going to be proving them. There's going to be a money trail that they will look at. Why stonewall it? Yes. No. Okay, Shazia says, why stonewall an investigation? Bhupesh Baghel claims the victim car. I've run out of time. Why resist it? Okay. You allege that they're stonewalling the investigation, Shazia. We'll watch that story only for one of time. Only for one of time. Shazia and all gentlemen, I quickly thank you right now. And like I said, this is just the beginning of a lot of political heat that you will see in the run-up to these elections. On the other side, we are back with another big debate. Don't go anywhere. In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नगर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था महीनों लगे। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ने से सबने मन बना लिया शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। जब पुरानी सरकार थी घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। राहुल आएंगे और वैसी भी टीम है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कट्टरता और क्रूरता की ये तस्वीरें हैरान करती। सिर्फ यही घर नहीं, हर घर में इसी तरह के तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें।